Why is a snake bite patient strictly instructed not to fall asleep or unconscious? Prevention on snake bites. So yeah, what is the difference between non-venomous bite and venomous bite? ठीक है, as I said, कोई भी सांप काटा पहला हॉस्पिटल जाने का, ठीक है. So ignore, we don't have to ignore it. Okay, it's a non-venomous bite. So let it be. Dettol लगा के कर दूंगा. It's not that. कुछ तो बीमारी हो ही सकता है. So, if a non-venomous snake bites you, usually this is the bite if the snake is bitten you properly and you are stable, you are calm. So what happens is a lot of the rescuers know about it. जब सांप काटता है, you don't pull our hand. हुआ है, let it be. नहीं तो उसका जॉ टूट गया या venom gland टूट गया तो snake is going to die. ठीक है. हो सकता है सांप का दांत जो है वो टूट के तुम्हारे हाथ के अंदर फंस जाए. तो टू अवॉइड सच थिंग्स, अगर प्रॉपर बाइट करता है तो इफ यू सी द लेफ्ट हैंड साइड नॉन वेनेमस बाइट, वहां पे यू कैन ओनली सी द टीथ का मार्क. बट वेनेमस साइड इफ यू सी दोस बिग टू venom glands going into your body. That is how you identify. If these two spots are there, that means most of the time you have got bitten by a venomous snake. So this is how you identify venomous, non-venomous bite. And how to avoid snake bites. If you are living, if you are living in a jungle area or if you are living in a farm, make sure to have a good pair of shoes, gumboots. रात को कहीं घूमने जा रहे हो, ठीक है, टॉर्च लेके जाओ. अगर कोई जमीन पे सोता है, जैसा बहुत सारे लोग होते हैं जो विलेजर्स है, जो गरीब लोग हैं जो जमीन पे सोते हैं, और काफी लोगों को आदत भी होती है जमीन पे सोने की, ठीक है. तो अगर एलिवेटेड करके खुद को थोड़ा एलिवेटेड करके सो, मच्छरदानी लगा के सो, तो देयर इज नो चांस ऑफ स्नेक गेटिंग इनटू योर बेड, ठीक है. थर्डली एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, टू कीप द एनवायरनमेंट क्लीन. जगह साफ रहेगा, चूहे नहीं आएंगे तो सांप ही नहीं आएंगे, ठीक है. द प्रॉब्लम इज सॉल्व देयर इटसेल्फ. जगह साफ नहीं है तो आने वाले, ठीक है. एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अवेयरनेस. नाउ वी ऑल हैव लर्न फ्रॉम मी. हम इतना बात कर चुके हैं सांपों के बारे में. लेट्स नॉट स्टॉप, आगे जाके लोगों को और अवेयर करें. और एंड दिस इज अ वेरी वास्ट टॉपिक. हो सकता है कहीं कुछ कमी मेरे से भी रह गई हो, मैं पूरा नॉलेज नहीं दे पाया हूँ, बट इट्स अ ह्यूज टॉपिक जो हमको रिसर्च करते रहना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए, फॉर आवर बेनिफिट्स ऑल्सो एंड फॉर अदर्स बेनिफिट्स ऑल्सो. डूज क्या करना है सांप काटता है तो, ठीक है. फर्स्टली अगर किसी को सांप काटा है, ठीक है, उसको चला के किधर नहीं लेके जाना, उसको बैठाओ. अगर समझो तुम्हारे कोई फ्रेंड को सांप काटा है, यू बिकम हाइपर, सामने वाले को तुम बोलो उससे पहले हार्ट अटैक आ जाएगा, ठीक है. मेक हिम फील काम, शांति से बैठा दो, ठीक है. फर्स्ट एड में जैसे जो जब बाइट होता है, यू विल सी ब्लीडिंग कमिंग आउट ऑफ इट. लेट द ब्लीडिंग गो, ठीक है. जितना ब्लीडिंग निकल रहा है उसमें से उतना ही वेनम भी बाहर निकल रहा है. इट इज नॉट गोइंग इनटू योर बॉडी. उतना ही वेनम फ्लश आउट हो रहा है. लेट इट फ्लश आउट, ठीक है. पिक्चर्स में देखे हैं, मूवीज में देखे हैं, ठीक है. हीरोइन को सांप काटता है, हीरो जाके हाथ चूसता है और फिर बाद में हीरोइन बच जाती है. इट्स नथिंग लाइक दैट. अगर तुम ये करने गए, गलती से भी अल्सर निकला ना, हीरोइन तो जाएगी, साथ में हीरो भी जाएगा. सो टू मेक श्योर कि ये गलती ना हो, तो वो चीज नहीं करना है, ठीक है. व्हेनेवर इट्स अ बाइट, तो बाइट किधर होता है, या तो आप पैर रखोगे सांप पे, या तो आप पकड़ने जाओगे सांप, ठीक है. पेट पे, सिर पे बाइट नहीं होने वाला. फार्मर्स को बाइट होता है क्योंकि जब प्लाविंग करते हैं हाथ नजदीक रह जाता है, बाइट होता है. फार्मर्स को बाइट इसलिए होता है, चप्पल नहीं पहनते हम लोग, ऐसे ही अपने खेतों पे जाते हैं, पैर पड़ जाता है, बाइट हो जाता है. मोस्ट कॉमन एरिया हैंड एंड फीट, ठीक है. पैर में पड़ा नीज के ऊपर, हाथ में पड़ा एल्बो के ऊपर. हाथ
जो है वो हार्ट लेवल के ऊपर रहना चाहिए, एंड मेक श्योर एल्बो के ऊपर यू टाई अ नॉट विद 2 fingers गैप, ठीक है। वायर नहीं यूज करना है, रोप नहीं यूज करना है, ठीक है। हैंकचीफ या पीस ऑफ क्लॉथ ऐसा कुछ यूज करना है। मेक श्योर कि वो ब्लड फ्लो है वो बहुत धीरे से चालू रहे। अगर वो धीरे से नहीं चालू रहेगा, अगर आपने पूरी तरीके से उसको रिस्ट्रेन कर दिया, तो क्या होगा कि हाथ काटना पड़ जाएगा या पैर काटना पड़ जाएगा, ठीक है। मेक श्योर कि आप वो ढीला छोड़ो। मेरे ख्याल से आपको हर 1 घंटे में उसको निकालना है एंड देन अगेन फिक्स इट। बट आई थिंक यू ओनली हैव 1 hour टू रीच द हॉस्पिटल। डोंट गो टू एनी फैंसी हॉस्पिटल्स। यू विल ओनली एंड ओनली गेट एंटी स्नेक वेनम इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल ओनली। बचाना है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ, सस्ता है और वहां पे बच भी जाते हैं, ठीक है। देयर आर ट्रेन्ड डॉक्टर्स फॉर स्नेक बाइट्स एंड, ठीक है। अगर तुम्हारे पास एम्बुलेंस नहीं है, बाइक पे जा रहे हो, ट्रिपल सीट जाओ, टेल द कॉप्स अगर रास्ते पे रुकाता है तो बीच में जो बंदा बैठा उसको बाइट हुआ, इफ यू टाई देम अप, खुद से हो सकता है बेहोश होके गिर जाए, उसको बाइट भी हुआ है, वापस उसका बाइक का एक्सीडेंट भी हो गया है, इट वुड बी अ क्रिटिकल केस, ठीक है। सही टाइम पे हॉस्पिटल इस तरीके से पहुंचाना। या डोन्स में मैंने जैसा बताया है, पैनिक नहीं होना है। ऑफ कोर्स बाबा के पास नहीं जाना है। सांप ने काटा तो सांप को मारोगे तो कुछ फायदा नहीं होने वाला है। जैसे पुराने मूवीज में दिखाया कि वो सांप ने काटा, उस सांप को पकड़ो और उससे वापस कटवाओ, डबल डोज हो जाएगा, ठीक है। तो वो नहीं करना है, ठीक है। जो दिखाते हैं मूवीज में, कट किया ब्लेड से या अपन ने ज्यादा ब्लड निकाल दिया, दैट इज ऑल, यू नो, दिस इज ऑल वेरी वेरी प्रोफेशनल मेथड्स व्हिच आई वुड, कटिंग ऑफ द वेन्स एंड ऑल। अगर आप कुछ गलती से कुछ गलत वेन काट दोगे तो ज्यादा इश्यू हो जाएगा। सो इट्स बेटर लीव इट टू द डॉक्टर। जो बेसिक है, हाथ बांधना है, वॉश द एरिया, मेक श्योर द ब्लड इज ड्रेन्ड आउट, ठीक है, एंड गो टू अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल। आइस नहीं लगाना है, जिसे उसने बाइट के ठीक ऊपर ही ये हैंकचीफ बांध दिया है, वो नहीं करना, ठीक है। और कुछ भी खुद से मेडिसिन नहीं लेना, ठीक है। बेस्ट इज गो टू द गवर्नमेंट हॉस्पिटल। So this is some funny things that I would want to discuss. जैसे स्नेक कैचर्स हो गए, रेस्क्यूअर्स हो गए, हमको बोलता है नागमणि मिला क्या अभी तो। हमको अगर नागमणि मिला होता तो हम शायद इधर नहीं होते और फ्री में सांप भी नहीं पकड़ते, है ना। तो नागमणि एक फैक्ट के लिए बोला जाता है, एक रिसर्च बताता है कि नागमणि इज एक्चुअली सांपों का किडनी स्टोन होता है। जब सांपों को किडनी स्टोन होता है, एक्सट्रैक्ट में से निकलता है और उसको लोग नागमणि बताते, which is not, which does not come out from their head, of course, comes out from somewhere else. So it is kidney stones, नागमणि होता नहीं है। 5 वाला सांप भी नहीं होता, ठीक है। हाँ, जेनेटिकल इश्यूज के वजह से कभी कभी हो जाता है कि 2 मुंह का सांप कभी कभी हो जाता है, बट 5 मुंह वाला नहीं होता। नागिन बदला लेती है, नाग को मारा तो, और फिर इच्छाधारी नाग आती है, काइंड ऑफ थिंग्स, यू नो। सो दिस इज ऑल मूवीज। वो एंटरटेनमेंट के लिए देखे तो इट इज इनफ। उसके आगे अगर आप ये सोच के चलते हो कि आज मैं जंगल जाके इच्छाधारी नागिन ढूंढूंगा, तो नहीं होने वाला, वो मिलेगा नहीं, ऐसा कुछ है भी नहीं, ठीक है। सेकेंडली, जो स्नेक चार्मर्स होते हैं, ठीक है, बोलते बीन बजाता है तो सांप नाचता है, सांप को दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, तो नाचता कैसा है, ठीक है। वो सांप वो बीन के मूवमेंट पे नाचता है, सीधा सीधा बजाएगा वो नहीं नाचेगा, अगर वो मूवमेंट किया तो ही नाचेगा। Any such people immediately inform the forest department, because एक तो सांप जंगली जानवर है, ठीक है। उनको आप हो सके तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर दो कि ऐसा ऐसा कोई स्नेक चार्मर आया हुआ है हमारे टाउन में, सिटी में, विलेज में। ये सांपों को उन लोग पकड़ के रखते हैं ताकि वो बाइट ना कर सके, उनके मुंह पे फेविक्विक चिपका दिया जाता है, उनका मुंह सिलाया जाता है। देयर इज, यू नो, नेक्स्ट लेवल क्रूलिटी डन टू देम विदाउट रीजन, जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट। तो यू नो, देखने में भले आपको अच्छा लगता रहेगा, बट उसका पीछे का हिस्ट्री बहुत बहुत बुरा है। तो मेक श्योर यू डोंट एंटरटेन सच पीपल, इंस्टेड कॉल द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड टेक द प्रॉपर व्हाटएवर द एक्शन इज देयर, लेट द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डू। नाग पंचमी के दिन कुत्तों को दूध पिलाना डाइल्यूट करके, गाय को दूध पिलाना डाइल्यूट करके, सांप को दूध मत पिलाना डाइल्यूट, सांप को तो दूध ही नहीं पिलाना।
अगेन इस नाग पंचमी के दिन ये जो स्नेक चार्मर्स होते हैं, दे कैच द स्नेक्स, आई थिंक एक आध 2 हफ्ते पहले से पकड़ के रखते हैं, ऑलमोस्ट अ मंथ के पीरियड में पकड़ के रखते हैं. दे डोंट गिव देम एनी फूड टू ईट, they are dehydrated. So you know, when you see such snakes, they're so dehydrated, इतने almost they are dying, they are dead, you know. और वैसे ही उनको छोटी सी टोकरी में बंद करके रखते हैं, and नाग पंचमी के दिन लोगों से पैसे लेते हैं, to get them there, and you know, किसी मंदिर के बाहर या किसी चौराहे पे लेके आते सांपों को, पैसे लेके दूध पिलाते सांपों को. अरे वो सांप बेचारा भूखा है, उसके सामने जहर भी रख दो या पानी भी रख दो या आप फिनाइल रख दो, वो भी पी जाएगा. सांप को जीने से मतलब है, वो भूखा है, वो जीना चाहता है. एंड व्हाट वी डू इज, स्नेक्स आर लैक्टोसिन इंटॉलरेंट. अगर उनके मुंह के अंदर जहर जाता है, ठीक है, अगर उनके मुंह के अंदर दूध जाता है, उस जहर से दूध फटेगा, पेट के अंदर जाएगा, विच विल क्रिएट अ गैस एंड दे विल डाई. सो अगर आप लोगों को नाग पंचमी में सही में ये जानवरों को रिस्पेक्ट देना है, दूध मत देना, सांपों को, कुत्तों को पिलाओ, गाय को पिलाओ, किसी गरीब को पिलाओ, पुण्य लग जाएगा. ठीक है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक पिक्चर इसमें ऐसा है कि एक बंदा हीरो बनने की ट्राई कर रहा है, ट्राइंग टू टेक अ सेल्फी विद द कोबरा. ठीक है. तो दिस इज हिज डायरेक्ट टिकट टू द हेवन और द हेल, व्हाटएवर इट इज. नेवर ट्राई टू डू दैट. वो सांप है, उसको कोई आइडिया नहीं है. जैसे लोग बोलते हैं आई एम अ स्नेक लवर, आई एम अ एनिमल लवर, और तुमको पता है तुम उससे प्यार करते हो, उसको नहीं पता है तुम उससे प्यार करते हो नहीं करते हो. वो डर के हमारे अटैक कर दिया, और ऐसे मोमेंट पे जैसा सेल्फी ले रहा है, इमेजिन इफ ही गेट्स बिटन ऑन हिज फेस, देयर इज नो वे टू सेव, यू नो, देयर इज नो वे टू क्योर हिम. फेस पे कहाँ क्या बांधोगे, कैसे ट्रीटमेंट दोगे, बिफोर यू रीच इट इज डायरेक्ट कनेक्टेड टू योर ब्रेन, हार्ट एंड ऑल, विल डाई सूनर देन द नॉर्मल वाइट, राइट. He's asking about the ecosystem surrounding rocks, the significance of snakes and reptiles, especially because these days in and around the Deccan plateau that is Hyderabad or any urban cities, the rocks are being cut off. So Okay. does it have an impact on reptiles? Can you give your holistic view on it? Yes. Wherever the demolition of the rocks happens, so basically there is huge kind of huge vibration going around under the ground. And as I said, snakes, because they can't see, they can't listen, all the other senses are much more active. So any such thing happening, they would want to avoid such area, and they would try to be away from such places. So there is very less chances of snakes being in such areas. Even if there is, I would say, so snakes, I have seen a lot many cases where I have seen old snakes, 15 years old snakes or whatever it is, aged snakes that can't move around much. So basically they choose such areas to go sit there. They stop eating, they stop attacking, they stop moving, but they're still alive, and they go one day there. So it's like, I think 2 or 3 days process. I've gone for a trek once, and I've seen a snake there. Between the rock, there is this one cobra lying there, not moving, nothing. So most of the time they go there to leave their body. And if there is some construction, or if there is some demolition happening constantly in such areas, snake would always want to avoid such areas. Next question from Vibor. How much time they need to refill their venom? Almost a week time after they eat the. So basically, if it is a smaller snake, so there's a method to it. If there is a smaller snake, they eat they eat twice in a week. Or if it is a larger snake, once or twice in 1 or 2 weeks. So they do not hunt much, so that their venom is not wasted much. So it takes almost around a week time to restrain their venom. And most of the time, snakes would not empty their glands. They would like if a snake bites a humans, so basically most of the time it is also there's something called as false bite or a dry bite, where the venom is not been injected, so that is how they know how to save their venom for their predators.
Okay, was one question. How is the Indian Russell viper so fat? So yeah, that is the natural way they are. It's not because they eat and they stay in one place and all. But yeah, to not to be mistaken, even if they see, even if you see a Russell viper so big then so fat, you might think the snake is lazy, but no, the speed is still the same. 3 bites in a second, and I would count it as one of the most aggressive and the dangerous snakes in the snake species. So even if we have done so much of awareness, I would still say it's a very huge topic. Still, the research are going on. There are still, every day there are new species is being discovered. And I would like to. I mean, all of these pictures that we used for the awareness have been clicked by some other rescuers, maybe a wildlife photographer. So thanks to them, through them, we could educate such people. We could. Do we need to carry AVS if we are on a hike, or can we take shots of AVS by oneself in an emergency? ASV, yeah, ASV, anti-snake venom. So as I said, anti-snake venom. So nowadays we get this one single vial for all the 4 species, all the big 4 species. If you read the bottle, you'll see snake's name written on it: cobra, crate, viper, sausage viper. So basically, ASV is being monitored by a doctor itself. Okay? So it is not necessary you will be recovering in one ASV, and ASV is administered through intravenous IV. Okay? So you can't just carry a ASV and you get bitten by a snake and you just can't pump it into yourself. So you need to monitor it. Some of them might have, some of them might have allergic reaction to the ASV. So doctor, it's mandatory to have a doctor's presence there when the ASV is monitored. So yeah, if you are going on a trek, I would say rather carrying a ASV, carry a proper. Just avoid snake bites, and if you get bitten by a snake, go to a government hospital. That's it. You'll get ASV. Okay. Next, how much maximum time do we to go to the doctor do we have when the snake bites? See, it depends on the human to human. So like, if you're panicked, if you're scared, especially I've seen kids when they have got bit. So basically here at the government hospital, whenever there's a snake bite, I go there, I see personally how is the reaction, what is the reaction, basically just to understand people, to understand the symptoms, what is the various kind of symptoms that we see in snake bites. So what I have noticed is, there is a young kid, a 5-year-old boy got bitten by a cobra. And same day there is a old lady bitten by an unknown snake, And the boy was bitten by a cobra, the leg was swollen and treatment was going on. But the boy survived. Because the boy was there on time, which was I think 15 minutes, he reached the hospital. There is around 1 to 1.5 hour time, but I would say as soon as possible, reach the hospital, go to the government hospital. The boy was reached on time, treatment on time. The boy didn't knew what had happened to him, He didn't knew the cause. He didn't knew what would happen to him after the snake was bitten. So that is why the boy was stable and he recovered from the snake. But the lady right next to that boy who was bitten by a non-venomous snake, she was suffering, she was in pain, she was showing different kind of symptoms and this and that. Luckily, I was there, and somebody from her house told, we found the snake, that snake bit her. So it's there at the house. So when I went, guess what it was? It was a rat snake, non-venomous snake. So it depends on humans. Like, it's totally on our control. If if you're calm, if you're not hyper, you have more time. If you're hyper, if your blood circulates faster, like as I said, there is difference between venom and poison. Venom affects your blood streams. So if the faster it flows, the faster it affects. So that is why you have to be calm whenever you are bitten by a snake. So you have more time. Why is a snake bite patient strictly instructed not to fall asleep or unconscious? Of course. So if the snake bite patient goes to go to sleep,
the blood circulation starts faster. Okay. That means the venom is going through into his body and into his system at double speed, which could kill him easily. So that is why a doctor is always there, making sure that the patient is not falling asleep. When rushed to the doctors, how is an anti-venom subjected? It's not like all the victims can identify snakes and know they are hemo or neuro or myotoxics. So is this how is in that case, how is an anti-venom subjected to a patient? Firstly, they would check for the bite marks. As I said, if they see a bite marks, if they see little palpitation or the swollen around the mark, or if you see if the patient is showing any of the symptoms that I told, like maybe if it is a viper bite, if it is a hemotoxic bite, the eye starts getting red, all your blood starts getting clotted and all. So you clearly see it's a viper bite, it's a hemotoxic bite, and they start giving ASV. If it is a neurotoxic bite, the patient is falling little dizzy. He would not able to walk properly. He would not be able to see properly. He might be puking. Such kind of things. And there is something called BTCT done. They do the blood test to check if there is any venom in your body and all. And accordingly, they give you anti-venom. So venom for all the 4 snakes, the anti-venom for all the 4 snakes are same, but it is administered in a different way. Maybe somebody is okay with 5 ASV shots. Maybe somebody would need more than 5 shots. So it depends on humans to humans. Question is, what is the lifespan of snakes? Depends on the snakes, 15 to 20 years maximum. Okay. Depends on different kind of species. Okay. Next question, how to stop people from killing snakes? I live in Andaman and Nicobar Islands. I understand this is a somewhat forest area, but some people don't care. Majority of the people supported to kill young snakes as it was parking area. I was standing and struggling there to save it. Any tips or suggestions? So I think he needs to contact the forest department. Forest department would always have a rescuers contacts. They have a list of people who are into this work. He needs to do that. And secondly, aware people about snakes, understand what is venomous, what is non-venomous, and even anybody could rescue a snake, in the sense not go and try and not by catching the snake, but if you see a snake, take preventive measures. If you're calling a rescue, you have to make sure the snake is there. So just take a gunny bag and throw it over the snake with a safe distance. So that if the gunny bag is on the snake feels calm, the snake calms down, it will stay there only. It won't move around. So till the rescuer comes, you have the snake there. And secondly, if there is no other option, if there is nothing that can be done, then there is few things available on the internet, like Amazon and ultrasound sticks. It's charged by the solar, and every 15 minutes it gives a vibration underground. It gives the ultrasound underground, which of which the snakes are scared, and the snakes avoid coming to that area. There is someone who is suggesting use the pipe technique. Huge PVC pipe near 10 feet with one end closed. Whenever you see the snake, you can use this technique without handling the snake. Just keep one end near the snake. It will go inside, and just raise it upside down as it cannot enter. Are you okay? Do you support that? I would say avoid handling such situations, because when you're handling snakes, your brain would not work. The coordination is not done properly. Might be there is some mistake there are thousands things that can go wrong. A slight bite and you don't even know the snake, that could give you serious issues. So I would say instead of handling the snakes, call proper rescue team or the forest department. They'll take the preventive measures.